Hey guys, you're watching True AK Speaks. मैं हूँ आयुष and in this video I will tell you how you can switch from one recovery to another. Currently let me just boot to the recovery in order to show you कि मेरे फ़ोन में कौन सी recovery है. Okay, I'm booting to the recovery and you can see the OTG device connected to the USB port of my device. एक्चुअली इसका काम क्या है आई विल टेल यू आफ्टर फ्यू सेकेंड्स. ओके, इट इज ओवर हियर. यू कैन सी द टीम विन लोगो. what I have to say today. Okay, reboot and then to system. Okay, it will reboot and okay, it have booted now. Okay, let me just unlock it and okay, let me just open my browser and to the browser you need to search for okay, let me just open a new tab. Okay, you need to search for Orange Fox. Okay, and it is over here. And here I need to just search for which device is. Okay, for searching just go to these three small lines and okay, it is already showing my device क्योंकि मैंने अभी अभी सर्च किया था. and instead of choosing your device, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है सर्च करने में because my device is Poco X3 Pro and Poco is sub brand of Xiaomi. यहाँ पे एक सर्च बार होगी और एंड हियर यू नीड टू टाइप द कोड नेम ऑफ योर डिवाइस. कोड नेम कैसे सर्च करना है? जस्ट गो टू गूगल एंड सर्च फॉर द कोड नेम ऑफ एनी डिवाइस यू हैव. सपोज यू नीड टू वांट द कोड नेम ऑफ Lenovo Z2 Plus. जस्ट सर्च फॉर कोड नेम Lenovo Z2 Plus और उसके बाद आपका कोड नेम कुछ वेबसाइट्स में आपको दिखा दिया जाएगा. ओके, लेट मी जस्ट टैप ऑन दिस Vayu. The code name of my device is Vayu and it is searching. Okay, here you just need to click on downloads and just choose United States जब ये आपसे region पूछे. And the downloading have begun and okay, the speeds are not that good. Okay, that download is done now and let me go to my file manager application and go to downloads and you can see over here this one, that's Orange Fox recovery zip and I need to extract it. I think it will do it like this and more and then tap on extract and extract here. थोड़ी देर में extract कर लेगा and okay, it have extracted. You can see the new files over here. अब आपको करना कुछ नहीं है, just copy this recovery image and paste it to your USB drive and you can see the recoveries Poco X3 Pro. यहाँ पे TWRP भी है and you can paste it over here जहाँ पे ये OTG drive लगी हुई है. Actually it is not a OTG drive, it is a pen drive anyways and it is pasted now. अब मैं आपको दिखाऊंगा how you will switch between the recoveries. Actually इस प्रोसेस को करने से पहले आपके पास recovery already installed होनी चाहिए and you need to take the backup of all your data or battery percentage. I mean it should be around 40-50 or even higher. Okay, let me just reboot to the recovery और now it is time to tell you कि मैंने ये पेन ड्राइव क्यों प्लग इन कर रखी है. Actually I have made a video जिसमें मैंने जो Android 12 के साथ रिकवरीज के में जो स्टोरेज इंक्रिप्टेड दिखाता है, यू आर नॉट एबल टू एक्सेस द स्टोरेज, उसके सॉल्यूशन के रूप में मैंने ये पेन ड्राइव का दिखाया है एंड
You can use the OTG drive, और अगर आपको यूज़ करना है तो you can use the memory card as well, but I wanted to try something new, so I choose this. Now select storage, and I selected the storage USB OTG, and here just select recoveries and Poco X3 Pro, and click on install image, और ये जो images है वो यहाँ पे दिखा रहा है. Just click on recovery.image, and यहाँ पे आपको select करना है in which partition you want to flash, and select recovery and then swipe to flash, and the flash is just going on. Okay, it is telling me that image flash is completed. Okay, now let me just reboot to the system. Okay, and let me just quickly unlock and reboot to the recovery, just in order to show you कि काम हो गया है. Actually काम अभी complete नहीं हुआ है, and one more thing is there that you need to do, and you can see the Orange Fox logo over here. You can see that it is not showing me the storage, and मेरे डिवाइस में Pixel Experience Android 12 installed है. How to install that, all the videos are in description and I button as well, and then choose USB OTG, and then the recoveries use Poco X3 Pro, and then recovery.image. Partition आप select कर लीजिए in the recovery, and then swipe to flash. Actually doing this thing is important, and let me just tell you कि मैं अभी स्टॉक MIUI में नहीं हूँ. MIUI की टेंडेंसी होती है दैट अगर आपने कोई कस्टम रिकवरी लगा रखी है तो ये अपनी जो स्टॉक रिकवरी है उसे राइट कर देता है ओवर इट, बट करेंटली आई एम ऑन पिक्सल एक्सपीरियंस, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. नाउ लेट मी टैप ऑन रीबूट रिकवरी. Okay, you can see the Orange Fox logo over here, and now you have successfully switched between the recoveries in your smartphone. The other video will be how you will give fast boot commands via the smartphones. आपको उसके लिए PC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. Please view my channel, and if you like my videos, please like and share them. Subscribe to my channel. You have been watching Troika Speaks. मैं हूँ आयुष. Thank you.